welcome. And this is another edition of the explosive weekend debate. You're watching it with me, Grihatul Siddiqui. Now, massive political slugfest has erupted after Lucknow police arrested Samajwadi Party's worker Manish Jagan Agarwal from the city's Hazratganj area. Agarwal was arrested after 3 cases were registered against him at the Hazratganj police station, allegedly for making objectionable remarks on Twitter. Some of them were against the Bharatiya Janata Yuva Morcha social media in charge, Richa Rajput. And all these, remember, were done through the Samajwadi Party official social media handle. Now, post the arrest, the Samajwadi Party workers staged protests on the streets of Lucknow and also clashed with the cops. As a result, the police resorted to lathi charge at the protesting cadres. Meanwhile, Samajwadi Party chief and former Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav also reached the police headquarters and, as a mark of protest, even refused tea that was offered to him by the Uttar Pradesh police. Now, that wasn't all. Akhilesh Yadav refused the hospitality by quipping, "What if the tea were poisoned?" The BJP now has hit back at Yadav, claiming that the SP chief's mocking the forces shows his shallow mindset. Also, the BJYM social media in charge Richa Rajput has now been booked for making objectionable comments against Samajwadi Party MP and party chief Akhilesh Yadav's wife, Dimple Yadav. But what explains this discourse? Also, how much of water does the symbolic SP protest hold, claiming that the entire Uttar Pradesh force, the police force, is compromised? Take a look. पुलिस प्रशासन उसके साथ है जो अन्याय कर रहा है, झूठ बोल रहा है। जो सच बोलेगा वो सजा पाएगा। जिस पुलिस की सुरक्षा में अखिलेश यादव जी खुद घूम रहे हैं, उसी पुलिस के ऊपर ये शक कर रहे हैं कि मुझे चाहे मैं जहर पिला देंगे। अगर आपको इतना ही उस पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर जो साथ घूम रहे हैं इनको भी हटा दीजिए। Opening this debate with my guests who join me on the broadcast this evening, Anila Singh of the BJP is with us. Also with us is Dolly Sharma of the Congress Party. Ashwini Dubey, who's an advocate, is also joining us. And also with us is Professor Bhuvan Joshi of the Samajwadi Party. Professor Joshi, let me begin with you. Why such a massive scale protest was required to be done, and that too outside the police headquarters in Lucknow today? देखिए, जब से ये योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार टारगेट इनके हैं। और आज जो ये घटना घटी, हमारे कार्यकर्ता मनीष अग्रवाल जी को जो गिरफ्तार किया गया, निश्चित तौर पे ये उसी की परिणति के तहत है। क्योंकि युवा मोर्चा की जो स्टेट हेड है ऋचा राजपूत, उन्होंने असभ्यता की पराकाष्ठा, एक नारी होकर एक नारी के खिलाफ इतने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करा गया। मेरे ख्याल से स्वतंत्र भारत में किसी नेत्री ने किसी भी नेत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करा। वो यहीं तक नहीं रुकी, वो उनकी बेटी जो कि अध्ययनरत है, उनके लिए भी गलत गलत शब्दों का प्रयोग करती हैं और वो ट्विटर पर आपको दिखाई दे सकता है। इसके साथ साथ इनके बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी के भी ट्विटर हैंडल पे लगातार, जो कि स्पोक्स पर्सन है इनके यूपी स्टेट के, उनकी बातें भी जो जिस अमर्यादित बातें लगातार देश और प्रदेश देख पा रहा है। निश्चित तौर पे आज माननीय अखिलेश यादव जी जब वहां पर गए तो वहां पर पुलिस मुख्यालय पे कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं बैठा था और वो अपनी बात को रख सके। फिर उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ और निश्चित तौर पे एक लोकतांत्रिक हमारा अधिकार क्षेत्र है। Okay, so I will come to your points one by one, Joshi Shah Saab. Sabse pehle to let me actually take this to the member of the BJP who's with us, Anila Singh. Anila, the first charge that the SP makes is going ahead and attacking the modesty of a woman. How is that justified? Why did Miss Rajput go ahead and tweet out the stuff that she tweeted against Dimple Yadav?
My Ram to everyone, and I definitely and very strongly say this thing that my party doesn't encourages any sort of obnoxious statements on social media platform. And I say sorry on behalf of the member of Bharatiya Janata Party who tweeted against something very unacceptable for Mrs. Dimple Yadav and her daughter. But the thing is, we have seen the type of comments coming on social media, on various social media platforms from this person, or I can say from official Twitter handle or the social media handles of Samajwadi Party, not targeting one person, but several persons. And it is, I'll say that it is not sadak chap language, it is red light chap language, the way they are tweeting. So it is absolutely wrong, unfortunate. And why it is unfortunate? Because for all the wrongdoings which was happening on the social media platform by the media cell, Akhilesh Yadav ji today went and advocated for that person. That is wrong. I mean, the head of the political party is going and advocating for a person who has done so wrong. It is absolutely incorrect. Okay. If anybody or, sorry. Yeah, please. All right. Let me actually come to Professor Joshi, then I'll come back to you, Anila. The point that BJP is making, Professor Joshi, वो ये कह रहे हैं कि आप जब इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली समाजवादी पार्टी के सोशल हैंडल से ये सारी ट्वीट्स आ रही हैं, उस इंसान को लेके आप बैक कर रहे हैं. क्यों अखिलेश यादव पहुंच गए पीएचक्यू? इसका मतलब तो यही है कि जो आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पे उन्होंने जो कुछ भी लिखा, उस सब चीजों को सपोर्ट कर रही है एसपी. मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ऋचा राजपूत के जो आप ट्विटर हैंडल पे जो अपशब्द है, वो एक सभ्य, अगर मैंने इसको सुना दिया, नहीं, सुनाने की कोई बात नहीं कर रहा. मैं आपसे बस एक सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ जोशी साहब कि समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्रोलिंग क्यों हो रही है? ये व्हाट इज द रीजन फॉर दिस वर्बल स्पैट? व्हाई इज इट हैपनिंग? एसपी का हैंडल है ना, वो तो इंफॉर्मेशन रिले करने के लिए होना चाहिए. ये ट्रोल्स कैसे बन गए? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ऋचा राजपूत है, वो लगातार हमारी पार्टी की नेता नेत्री और अन्य नेताओं पर लगातार ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि अगर मैंने एक भी सुना दी, सब लोग, पूरा देश टीवी बंद कर देगा. वो तो हमने देखा है, उनकी वजह से उनको बुक किया गया है जोशी साहब, उनको बुक भी किया गया है. लेकिन टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट मिस्टर जोशी, यू वुड अग्री टू दिस? तो अगर उन्होंने गलत किया तो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से इस तरह के ट्वीट्स जाने चाहिए, उसको आप जस्टिफाई करते हैं? मैं आपको कह सकता हूं, उन्होंने उकसाया है, ये क्रिया की प्रतिक्रिया है. आप हमारे नेताओं को, आप हमारी महिलाओं नेताओं को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को इतने गंदे शब्द एक स्त्री होकर लिख सकती है? मैं अनिला जी से पूछना चाहता हूँ, आप एक अनिला जी, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट. लेट मी कंप्लीट अनिला जी. प्रोफेसर जोशी, अनिला जी, आप एक महिला हैं. आप एक महिला का कैसे असम्मान कर सकती है? आप नहीं कर सकती है. निश्चित तौर पे इसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है. इस महिला को सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त है. ये बीजेपी के कहने पर, बीजेपी के इनको वाम हस्त प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है. ये तभी कर सकती है. जोशी जी, मैं आपसे अभी मैं अनिला जी को अभी वही सवाल पूछूंगी जो आपने पूछा है, लेकिन उसके पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या समाजवादी पार्टी इसको सपोर्ट करती है, जिस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे? क्या इसको सपोर्ट करती है जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं? मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, ये केवल एक क्रिया जो बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी बर्दाश्त कर रही थी, उनकी एक महिला होने के कारण उनके सम्मान में नहीं बोल रही थी. ये केवल क्रिया की प्रतिक्रिया है. अगर हमारे नेताओं को सिर्फ ऋचा राजपूत के अगेंस्ट ट्वीट नहीं हुआ है जोशी साहब, बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स हुए हैं ऑफिशियल हैंडल से जो बिल्कुल भी समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया को शोभा नहीं देते. तो आप क्या उसको एंडोर्स कर रहे हैं? मेरा ये सवाल है जिसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया. मीनवाइल, लेट मी गो बैक टू अनिला सिंह जी. Anila, the fact that you say that we condemn any such statement against a woman, going ahead and attacking the modesty of a woman, but you say but. Why will you back it up and why will you follow that entire statement with a but? That means there is room for something that is left unsaid.
why are you endorsing a statement like this that has been made? Because here we're talking about Richa Rajput. She tweets out a picture where she's reached the BJP head office in Lucknow and she's calling her troll army. By the way, there's a lot of brazening it out that's happening. She's saying lawyer bhi le aana zamanat ke liye. Do you think that kind of brazening it out after tweeting what she tweeted was required? Does the BJP want something like this? Yeah, I'll tell you why I said but. But I said because Richa Rajput is a worker of Bharatiya Janata Party, no doubts about it. Fine. So there are so many workers in Samajwadi Party who keeps on tweeting, who keeps on trolling with the dirtiest language, okay? Why is there no action against them? Bharatiya Janata Party, let me complete please. I just want to say one statement. But never ever from any of the social media platform of Bharatiya Janata Party Uttar Pradesh and even the India, Bharatiya Janata Party India or Bharatiya Janata Party Uttar Pradesh or any of the Bharatiya Janata Party in our country, never ever such obnoxious, dirtiest language has been used for any person. And you're talking, Mr. Joshi, you're talking about women. Yes, I'm a woman, but I'm a mother as well. The language from your Twitter account, Samajwadi Party's Twitter account, used for the parents of our workers, whether they are a spokesperson or anybody else, it is so dirty, it is so shameful. How you can drag parents of any person. We can go on about which tweet is dirtier than the other. There is no end to this argument. Let me actually bring in Dolly Sharma of the Congress. Dolly, the kind of discourse that has gone down to, what do you have to say about it? And there are 2 points here. A, using the official social media handle of a political party, making statement like this, and also the argument that Anila is backing and hiding behind. I would say that. Why go ahead and allow your party workers to say anything and everything in the name of personal opinion from their own personal handles? Whatever said and done, they are representing your political party. Whether they do it through their personal handle should be obviously accounted for. See, we Indians do not appreciate such language, such offensive remarks, such derogatory remarks on anybody, whether it is a woman, whether it is a male or a female. We do not appreciate such remarks because, and the tweets that we have seen have crossed all the limits, whether it is BJP, whether it is Samajwadi Party. To be very honest and frankly, we shouldn't answer the way they have answered. It is not the right way. We are representing a party, we are actually, the people of this country see what we show. So this is not the right way to answer if somebody is tweeting this ways. The BJP lady, the IT cell lady who has tweeted this way to Dimple Yadav is absolutely not appreciated, not acceptable in India or anywhere in the whole world, the language that they have used. And in return, I must tell Samajwadi Party also that they should reply in such a way. They should have gone to the police, they should have gone to the Prasashan and would have asked for the, to take the right course. To take the police, to ask the police to take the right action against them. This is the right way to do. Tweeting in such a way and showing and give it an impression in the large way is not acceptable. I will come to the police action part of it. I'll come to the police action part of it, but let me bring in Advocate Dubey first. Ashwini, the kind of cases that are being slapped against Mr. Agarwal, are they justified? Do you think these are in the right direction under which he's been arrested? Griha, thank you for having me here. Griha, the dignity of a woman is paramount in our country. The Supreme Court, the Parliament, the Criminal Procedure Code, the Indian Penal Code, other laws says that the women must not be abused, must not be treated like they should be given the equal rights and they should be treated with dignity and respect. Here there are two sets of a case. One, when Richa Rajput has specifically written a complaint to the police station, police is stating that this gentleman has made a complaint. Complaint is stating has threatened her for rape and kill.
then the cognizable offense under section 354 is sexual harassment, 504 intentional insult with intent to provoke breach of the peace, 506 punishment for criminal intimidation comes out. The second complaint, vice versa, which has come, that is also derogatory. Now Mr. Joshi, I was hearing Mr. Joshi's argument. Mr. Joshi saying kriya ki pratikriya, it means that you don't follow the law of the land. क्रिया की प्रतिक्रिया का मतलब it is not an offense where you are attacking somebody with respect to protect you. There is a law. You should have gone to the police station. You should have filed a complaint stating that, look, this gentleman or this gentle lady is abusing our leader. Or the lady itself has gone to the police station. But abusing, threatening a lady to rape and kill her, it's not justified. Now, two, when an FIR is registered, police is duty bound to take it to the logical conclusion. There are three stages of a criminal case. One is a suspect stage, second is a accused stage, third is this convict or a person who has been respectfully acquitted by the court of law. Now, if court comes to the conclusion tomorrow that no offense has been, that's all right. But as of now, a girl, a lady who is very respected in our country has filed a complaint to the police station stating that, look, from this handle, which handle is the official office bearer of a Samajwadi party. This handle has accused me, threatened me to rape and kill. Of course, this is the problem of worry. And now, kriya ki pratikriya, Joshi sahab, nahi hoti criminal case mein. A respect of a lady is paramount, or koi offense heavy, then you should have immediately approached the police station. Absolutely. That's a very important point that Ashwini is making. Ashwini, what happens if a lady goes ahead and tweets out stuff which is obviously attacking the dignity of another woman? What are the kind of charges that she can be slapped against her? What happens in that case? In that case also, the lady is accountable and offense should be immediately registered. But only thing is a written complaint. Written complaint should have been given to the police at that point of time. Subsequently coming, taking those offenses, saying कि ये मेरी क्रिया की प्रतिक्रिया है, वो तो वही लगता है, it's a revenge thing. Law says the moment a cognizable offense or non-cognizable offense is committed, one has to approach to the police authorities. But is there any complaint which suggests that Mr. Joshi or Samajwadi Party or Bharatiya Janata Party has approached to the police station is stating that कि ऋचा राजपूत या किसी और ने has... Mr. Joshi, Professor Joshi, please respond. Instead of taking law and order in your own hand, instead of being a troll party, did you actually take the matter up with the police like Richa did? देखिए, पहले तो मैं अनिला सिंह जी को कहना चाहता हूं, अनिला सिंह जी ने जो कहा है इनके बारे में, ऋचा राजपूत के बारे में, ये साधारण कार्यकर्ता नहीं है, ये युवा मोर्चा की स्टेट हेड है मीडिया की। एक बड़ी पोस्ट है, जिम्मेदार पोस्ट है, जो इनको सामान्य कार्यकर्ताओं की तरह ट्रीटमेंट करने की अनिला सिंह जी ने कोशिश करी है। वो सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, वो लीडर है। और उसके लिए तो मैंने ऐसे ही कॉल आउट कर दिया, वो तो ये तो पॉइंट किसकी जरूरत नहीं है। आप इसका जवाब दीजिए जो मैं पूछ रही हूँ, रेप थ्रेट्स कैसे जस्टिफाइड है? मैं आपको मेरे जो शब्दों का क्लियर अर्थ था, मैंने कहा हमारे नेताओं के खिलाफ इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी, और इनके एक और प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी जी, उनके भी ट्विटर हैंडल पे मेरे पे सारी चीजें हैं। मैं आपको सबूत दे सकता हूं सारी दोनों के। जोशी साहब, उनकी कंप्लेन की गई है? जी। हैव यू कंप्लेन टू द पुलिस अबाउट देम? मेरे को जहां तक जानकारी मिली है, रिचा जी के खिलाफ FIR कर दी गई है। जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे को संज्ञान विषय है कि FIR कर दी गई है। वो तो मैंने बताया जी। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि समाजवादी पार्टी ने कंप्लेन की है पुलिस को इन लोगों के अगेंस्ट जो आप कह रहे हैं? अब विषय प्रारंभ हो गए हैं, अब विषय पे काम करना शुरू हो गया है। अच्छा, अब पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो क्रिया की प्रतिक्रिया मैंने कहा, जिसको हमारे एडवोकेट साहब ने भी कहा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, लगातार हमारे नेताओं के शब्द, इतने घटिया शब्दों का प्रयोग, जब आज बिल्कुल इन्होंने पराकाष्ठा पे पहुंच गई है हमारे नेताओं के अपमान का, हमारी नेताओं की बेटियों के अपमान का, तब परिणाम स्वरूप उन्होंने ये जो टिप्पणी करी है। मैं निश्चित तौर पे कानून का विद्यार्थी होने के कारण कह सकता हूं, सभ्य समाज में, लोकतंत्र में और संविधान में इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन भड़काने का काम और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संरक्षण ऋचा राजपूत को बहुत अच्छे से मिला है। You are again brazening it out, जोशी साहब। आप अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अगर आप कानून के स्टूडेंट हैं तो आपने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? अब पार्टी ने FIR करी है ना उनके खिलाफ।
पार्टी ने एफआईआर करी है, पार्टी टेक एक्शन, पार्टी ने एक्शन लिया. But you are still justifying the rape threats that were sent out to her by saying कि ये सब justified है. I'm not justified. I'm saying the law is work. कानून अपना काम करेगा. कानून के पास आप देर से क्यों गए, मैं वही तो पूछ रही हूँ. ये आपने समाजवादी हैंडल से ये जो ट्वीट आउट हुआ है उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप किसी को रेप थ्रेट कैसे दे सकते हैं? उसके लिए आज हमारे लीडर वहां पर, हमारे लीडर माननीय अखिलेश यादव जी आज मुख्यालय पे गए और वहां पर उनको कोई जिम्मेदार पुलिस अधिकारी नहीं मिला. उसी विषय को रखने के लिए वो गए थे. आप कंडेम कर रहे हैं, आप कोई एक्शन लेंगे अग्रवाल जी के अगेंस्ट? अनिला, आई विल कम टू यू. आप एक्शन लेंगे अग्रवाल जी के अगेंस्ट? निश्चित तौर पे पार्टी के अनुशासन समिति उसका फैसला करेगी. Okay, all right, Anila. Now the second point that I want to raise, and this was also through a gesture by Akhilesh Yadav. He refused tea. The idea is not refusal of tea. The idea is the comment that he ended up making, saying that he has no trust in the law and order in Uttar Pradesh, also claiming that the police force has been completely compromised with, and that's the reason he chooses not to actually have the tea that's been offered to him by the police forces. That's a serious charge that's been made by SP by not adhering to the law and order, also claiming that they cannot go ahead and do that because it's under the BJP. All right. I will make two quick comments here about Lal Topi ki Gundagardi wali Samajwadi Party. Number one, I was listening what Mr. Bhavan Joshi was saying about Richa Rajput. ठीक है साहब, आप कह रहे हैं रिचा राजपूत ने जो कहा बिल्कुल गलत कहा. मैं रिचा राजपूत की यहाँ पे वकालत नहीं कर रही हूँ, परंतु समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर हैंडल है, उससे गंदी से गंदी गालियां दी गई हैं. एक महिला के विषय में जाने उल्टी सीधी चीजें क्या क्या कही गई हैं, और बारंबार अलग अलग, चाहे वो हमारे प्रवक्ता हैं चाहे हमारे लीडर्स हैं, उनके बारे में गंदी सी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया है. साहब आप बताइए क्या वो सारी चीजों को एंडोर्स करते हुए वो तो मैं पूछ चुकी हूँ, वो तो मैं आप पूछ चुकी है. आप मुझे बताइए जो मैं आपसे पूछ रही हूँ. I have already asked those questions. We will actually eat into the time of the debate. Yeah. I am going to come what you have asked me, but I have to tell Mr. Joshi. No, you're repeating the questions. I've already questioned him for that. लगातार जो है हमारी पार्टी के लीडर्स के लिए जो भी कुछ कहा जा रहा था, अखिलेश यादव जी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसकी एडवोकेसी यानी वकालत करने के लिए जमीन पर उतर आए और पुलिस मुख्यालय जाते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स जाते हैं. There, let me tell you, Mr. Joshi, today is Sunday, and Mr. Yadav did not ask DGP or Chief Secretary or any of the the senior most police officials that he desires to meet them. In police headquarters, IG rank officer was there to receive him, to take the complaint, whatever he wanted to give or to say. And in a very respectful manner, he offered him tea. And what did he say? मैं आपकी चाय नहीं पीऊंगा, आप जहर मिलाकर पिला देंगे तो? Is this the way to talk to any of the police person? Yeah, but any which way you can't defend such comments. Dolly likes to comment. Dolly would like to comment. Okay, one second. One at a time. Okay, Anila, let Mr. Joshi answer. Comments, right? Guys, there are three people talking at the table. Let Mr. Joshi answer. You've just raised a question. इस तरीके से कोई शायद आपको काम करने वाले किसी व्यक्ति के लिए कोई बोल नहीं सकता है. Okay, Anila, you've asked your question. Anila, let him answer. Anila, please. Anila. This is the ultimate insult of Uttar Pradesh police. Okay, you have just made your point. Anila, you've made your point. Joshi sir, please. Anila, one second. Dolly, I'll come to you. Dolly, I'll come to you. जिस प्रकार आप हमारे नेताओं के साथ व्यवहार कर रही है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार कर रही है. Anila, please let him respond. Anila, please. Well, there's no point you guys talking over one another. Let me bring in Congress. That's okay. Anila. Okay, Anila and Professor Joshi. That's it. Okay, that's enough. Okay, Dolly, please make your point. Yes, what were you saying? I'm saying, Riyaji, you can't be defending such statements, whether it is BJP or Samajwadi Party. You can't be defending such statements made publicly. And also, सभ्य समाज में इस तरीके की भाषा
महिलाओं के लिए क्या संदेश देती है? भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में फैली हुई है। समाजवादी पार्टी एक विपक्ष की मुख्य धारा की पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और इस तरीके के कमेंट से महिलाओं के ऊपर टीका टिप्पणी में और पूरा सबको उसके अंदर कूद जाना, ये what do you have दिखाता to है say? कि हम किस What do you तरीके have की to say, भाषा को Dolly? endorse कर रहे हैं। What do you have to cannot do say? this. No. My question. We have actually changed from that question. We have already dealt with that. What do you have to say about the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav saying that he doesn't have any trust in the law and order situation in the state of Uttar Pradesh? How do you read those comments? Of course, madam, I agree with him. Because आप देखिए, जहां पर एक लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या कर देते हैं जीप चढ़ाकर, वहां उस हत्यारे को जो खुले तौर पर दिख रहा है, उसे चाय पिला रहे हैं पुलिस बिठाकर, और वहां उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या है? एक बेटी को आग लगानी पड़ती है मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर जस्ट बिकॉज जस्ट टू रजिस्टर एन FIR अगेंस्ट द कन्विक्ट। कुलदीप सिंह सेंगर को कितना बचाया गया 2 साल तक, वो सबने देखा है। Absolutely. All right, so Anila, that actually speaks about the law and order in the state of Uttar Pradesh. This, of course, is going to be a larger debate, or probably that's your answer. Why did he not go ahead and accept tea at the hands of the police forces in Lucknow? Because he was there to protest against the arrest of his worker and his leader. Now, we leave it at that. However, the larger question that I'd want my viewers to actually concentrate upon is the discourse. Where has it gone down to? Do we need language like this in political discourse, even if you do not agree with one another? Thank you so much. I'd like to thank all my guests for joining me on the broadcast. With that, I've come to the very end of this edition of The Debate, the explosive weekend debate. Thank you so much for watching.